Now the causes for the rise of imperialism. If you remember the impact of industrial revolution, what were the impact of industrial revolution? We were having the mass production, surplus production, trade and commerce, right? We were having pakka roads over there, a new economic system was there. Those impacts, right, became the cause for the rise of imperialism. For example, the very first one, surplus production, that was the impact of industrial revolution. Industrial revolution आने से चीज़ें बहुतायत में बढ़ने लगी. लार्ज प्रोडक्शन, पीपल स्टार्टेड बिल्डिंग थिंग्स, राइट. अब एक देश में वो सारी चीज़ें यूटिलाइज या कंज्यूम इज़ द राइट वर्ड, कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, तो वो जो चीज़ें थी वो सरप्लस के रूप में आने लगी, राइट. तो दैट सरप्लस प्रोडक्शन गिव राइज टू द इंडस्ट्रियल कंट्री in order to have the marketplaces to move from one place to another. अब एक जगह से अगर दूसरी जगह जाओगे आप लोग and you wanted to sell your products over there, तो definitely you will try to earn profit. तो ये जो surplus production है जिसको उन्होंने बेचना था दूसरे देशों में जाकर इसने मौका दिया उन देशों को दूसरे देशों में जाकर, यानी कि इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ को दूसरे कॉलोनीज़ में जाकर, कॉलोनियल नेशंस में जाकर बेचने का, और वहाँ पे दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ दोज कंट्रीज़. सेकंड, नीड फॉर रॉ मटेरियल. नाउ द इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू डेवलप देयर इंडस्ट्रीज़, एंड इन ऑर्डर टू डेवलप दोज इंडस्ट्रीज़ दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव रॉ मटेरियल. किसी भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, चलाने के लिए, वी सपोज टू हैव अ रॉ मटेरियल. किसी भी किस्म से कोई भी इंडस्ट्रीज़ लगानी है, बिकॉज यू गोइंग टू प्रोड्यूस समथिंग, फॉर टू प्रोड्यूस समथिंग यू सपोज टू हैव अ रॉ मटेरियल. तो ये जो रॉ मटेरियल था ये कहाँ से आएगा, राइट. एंड देन दे स्टार्टेड मूविंग टू एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, एंड व्हेन दे स्टार्टेड मूविंग in these countries, they started exploiting these countries, and this exploitation is called your imperialism. The third thing is the development of modern means of transportation and communication. It became easier to reach from one place to another, right. Let me read it for you. The invention of steamships, railway, telephone, telegraph and post enabled man to conquer space and time. Distant lands could easily be conquered. As I told you, it became easier for one person to move from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया, एक जगह से दूसरी जगह से रॉ मटेरियल पहुंचाना आसान हो गया. अगर आपके you have produced something, तो you can easily send that production from one place to another just because of this development of modern means of transportation and communication. The fourth point, that is pressure population. When these industries started developing in these European countries, तो obviously इनकी population भी increase होनी शुरू हो गई, right. Population increase होने की वजह से they started looking forward to fulfill the needs of their population. अब अपनी population increase हो रही है तो definitely they started looking to your